Welcome to PyMaths. This is the second lecture of Chapter 4 Quadratic Equations, Introduction to Quadratic Equations. Let's begin with it. First, we'll be studying how to identify a quadratic equation. So our first question is, check whether the given equation is quadratic. x plus 1 whole square equals 2 into x minus 3. अब हमको ये इक्वेशन गिवन है, वी हैव टू चेक कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं. अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म हमने लेक्चर 1 में पढ़ी थी, विच इज ax square plus bx plus c equals to 0, where a is not equals to 0, or we can say the coefficient of x square is not equals to 0. तो अब इस क्वेश्चन में हमको यही चेक करना है कि ये जो हमें इक्वेशन गिवन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं. सो x प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, इसमें a प्लस b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाएगी, एंड 2x minus 3 is equals to 2x minus 6. 2 will be multiplied with x and 2 will be multiplied with 3. So we'll get x square plus 1 equals minus 6. यहाँ से 2x and 2x will get cancelled. So we'll get x square plus 1 plus 6 equals to 0, that is x square plus 7 equals to 0. तो अब ये जो इक्वेशन आई है ये हमारी ax square plus bx plus c equals to 0 की फॉर्म की है. Hence the given equation is a quadratic equation क्योंकि ये ax square plus bx plus c is equal to 0 की फॉर्म की है. इसमें हमें bx वाली टर्म नहीं गिवन या नहीं आई हमारी, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो x square plus 0x plus 7 equals 0. तो ये exactly इस फॉर्म की हो जाएगी. Next question is, check whether the given equation is quadratic. फिर से हमको वही चेक करना है. हम क्या करेंगे, x minus 2 into x plus 1 equals x minus 1 into x plus 3. अब बायनॉमियल की मल्टीप्लिकेशन है, we'll simply multiply. x इस टर्म से भी मल्टीप्लाई होगा, x इस टर्म से भी मल्टीप्लाई होगा, so we'll get x square plus x minus 2x minus 2 equals x square plus 3x minus 3. This x square and x square will get cancelled, so we'll get x minus 2x as it is. This plus 3x will become minus 3x and this minus x will become plus x जब वो लेफ्ट हैंड साइड पर आएंगे, and minus 3 will become plus 3 which is equals to 0. तो यहाँ से हमारा x plus x is 2x, 2x minus 2x will be 0, so we are left with minus 3x and 3 minus 2 will be 1 equals to 0. So 3x minus 1 equals to 0. अब इसमें x स्क्वायर की कोई भी टर्म नहीं आ रही, हमारी जनरल इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c equals to 0, बट इसमें हमारी x स्क्वायर की कोई भी टर्म नहीं आ रही. Therefore this is not a quadratic equation as it is not of the form ax square plus bx plus c equals to 0. Now there are some questions that you have to try on your own. इन सब questions में भी आप simplify करके बस ये check करोगे कि simplified form में ax square plus bx plus c equals to 0 की form का आ रहा है, then yes it is a quadratic equation, otherwise it is not. Next is how to form a quadratic equation. So we have to find out कि हम quadratic equation form कैसे करेंगे. That means कि अगर हमें statement question या word problem given है तो उससे हम quadratic equation कैसे form कर सकते हैं. So the question is, represent the given situation in the form of a quadratic equation. The product of two consecutive positive integers is 306. We need to find the integers. तो हमको इसमें सॉल्व नहीं करना, सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करनी है. तो अब हमें दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स की बात करिए. दैट मींस कंसेक्यूटिव नंबर्स वो होते हैं जो साथ साथ आते हैं. फॉर एग्जांपल 2 and 3, 7 and 8, 10 and 11, जो साथ साथ नंबर्स आते हैं वो कंसेक्यूटिव होते हैं. और यहाँ पर कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स की बात की है, मतलब पॉजिटिव नंबर्स हैं. तो एक नंबर हमने x लेट कर लिया एंड दूसरा नंबर हमने x प्लस 1. ऑब्वियसली अगर फर्स्ट 2 है तो 2 प्लस 1 सेकेंड नंबर है, फर्स्ट 7 है तो सेकेंड 7 प्लस 8 है. तो कंसेक्यूटिव नंबर साथ साथ आते हैं. The question says product of these two integers means, product means multiply करना. So x into x plus 1, the product is 306. So 306 बस हमने multiply कर दिया. x into x, x square plus x equals 306, or we can say x square plus x minus 306 equals to 0. तो अब ये equation हमारी ax square plus bx plus c की form की है, तो therefore it is a quadratic equation and हमने इस problem को quadratic equation में express कर दिया.
Next is a train travels a distance of 480 kilometers at a uniform speed. If the speed had been 8 kilometers per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. हमको speed find out करनी है. We will not calculate the speed, बस हम equation form करेंगे, quadratic equation. तो अब distance, speed, time की बात की है. We know the relation distance is equals to speed into time. बस इसी को हम use करेंगे. हमने assume किया let the speed of the train be x kilometers per hour, and in the question we are given it travels a distance of 480 kilometers. So distance covered is 480 kilometers, so time will be distance upon speed from using this formula. So time is equals to 480 by x. 480 was the distance, x is the speed. अब हमको equation frame करनी है. It says if the speed had been 8 kilometers per hour less. Now according to question we know that speed into time is distance. अब it says speed had been 8 kilometers per hour less. So we let x as the speed. So therefore x minus 8. It takes 3 hours more. तो टाइम हमने लिया था 480 by x, तो 480 by x में 3 ऐड हो जाएगा because 3 hours more लग रहे हैं. Therefore our distance is 480. It was given in the question, so it becomes x minus 8 into 480 by x plus 3 equals 480. अब इसको हम बस simpler equation में frame कर देंगे. We'll multiply both the brackets. We'll get 480 plus 3x minus 3840 by x minus 24 equals 480. This 480 and 480 will get cancelled. So we'll get 3x minus 3840 by x minus 24 equals 0. अब इसमें हम LCM ले लेंगे. LCM लेने के बाद we'll get this equation 3x square minus 24x minus 3840 equals 0. और इसको हम 3 कॉमन लेके सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं. x square minus 8x minus 1280 equals 0. और ये हमारी quadratic equation frame हो गई. Now there are some practice questions that you have to do. इसमें हमें सब क्वेश्चंस में देयर आर टोटल 4 क्वेश्चंस और आपको इनमें इक्वेशंस फ्रेम करनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. जॉन एंड जिवेंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स. दो लोग हैं, दोनों के पास टोटल 45 मार्बल्स हैं. तो इफ वी लेट दैट जॉन हैज x मार्बल्स, देन जिवेंती विल हैव 45 minus x because टोटल हमारे पास 45 मार्बल्स हैं. बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच. तो अगर जॉन ने 5 खो दिए तो ही इज लेफ्ट विद x minus 5 and Jivanti is left with 45 minus x minus 5. So that will be 40 minus x. And it says the product of the number of marbles they have now is 124. So they have x minus 5 into 40 minus x, these marbles, and उनका product means multiplication is now 124. अब आप इसको solve कर सकते हो simpler form में and you will get a quadratic equation. Second question is the area of a rectangular plot is 528 meters square. The length of the plot is 1 more than twice its breadth. We need to find the length and the breadth. So if we let breadth as x meters, तो हमारी लेंथ क्या हो जाएगी 1 more than twice its breadth. Breadth is x. तो अब हमारी breadth हमारी x हो गई, लेंथ हमारी 1 plus 2x हो गई. नाउ एरिया इज गिवन टू बी 528. तो आप एरिया के फॉर्मूले में पुट कर सकते हो लेंथ इनटू ब्रेथ एंड यू विल गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. नेक्स्ट इज अ कॉटेज इंडस्ट्री produces a certain number of toys in a day. The cost of production of each toy was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. तो नंबर ऑफ टॉयज कितने प्रोड्यूस हुए वो हमें नहीं पता. सो वील लेट दैट एज x एंड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज 55 minus the number of toys. So rupees 55 minus x. Now it says on a particular day the cost of production was rupees 750. तो अगर एक टॉय की कॉस्ट 55 minus x है तो x टॉयज की हो जाएगी x into 55 minus x and that is given to be 750. So इसको आप मल्टीप्लाई कर लोगे you will get a quadratic equation. हमको बोला है कि total cost of production, so total will be x into 55 minus x और वो हमें 750 given है. The last question is Rohan's mother is 26 years older than him. तो अगर रोहन की एज हम ले लेते हैं x, तो रोहन की मदर की एज क्या हो जाएगी 26 years older है, वो उनसे ज्यादा बड़ी हैं, तो obviously x plus 26. The product of their ages 3 years from now. 3 years बाद अगर रोहन अभी x years का है तो after 3 years he will be x plus 3.
एंड रोहन की मदर अगर अभी x प्लस 26 की है तो आफ्टर 3 years शी विल बी x प्लस 26 प्लस 3 विच इज x प्लस 29. अब उनकी एजेस का हमें प्रोडक्ट लेना है, मीन्स मल्टीप्लाई करना है, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों की एज एंड इट विल बी 360. तो आपकी इक्वेशन बन गई. इसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हो. सो दिस इज हाउ यू कैन फ्रेम all the quadratic equations. If you have not understood anything in this video, you can leave the comment below in the comment section, or you can mail on the mail ID given in the description box. You can also use Facebook or Instagram to ask your doubts. You can just write the question number or the question whichever you have not understood or any topic that you have not understood.